Origin, growth, and development of drama. The origin of the drama is deeply rooted in the instincts of mankind. This is true of the Greek, Indian, Chinese, Egyptian, and of the modern Christian drama. The ancient Greek drama shows close kinship with the religious ceremonies of people. Greek drama is acclaimed to be the earliest recorded form of drama, that is 5th century BC. It is said to have originated from the Dionysian religious rite and also remained a communal rite during the classical period. Dionysius, god of life and death, god of wine and of fertile earth, was the father of Greek comedy and tragedy. तो ड्रामा का ओरिजिन को अगर हम देखें तो वो ग्रीक, इंडियन, चाइनीज़, इजिप्टियन और मॉडर्न क्रिश्चियन ड्रामा के अंडर आते हैं। और ड्रामा, जो ग्रीक ड्रामा की बात करें तो उसका क्लोज रिलेशन माना जाता है सेरेमनीज ऑफ पीपल, दैट इज़ रिलीजियस सेरेमनी के थ्रू वो लोग ड्रामा बताते थे। तो ग्रीक ड्रामा की अगर हम बात करें तो वो 5th सेंचुरी बीसी में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उसको पैरे ड्रामा कहा जाता है। The dramatists of this age gave insight into the philosophy and religious belief of the ancient Greek. उनके ड्रामा में मेनली फिलोसफी और उनके रिलीजियस बिलीफ को ही शो किया जाता था। These early Greek plays treated life's basic problem with almost honesty and attacked social ill using legendary and mythological themes. This helped to ensure sanity and balance in the society. Drama and theatre also played important roles in the social life of the people in ancient Roman Empire, England, Germany, and France. Playwrights like Shakespeare, Brecht, Goethe, Molière, and others in varying degrees used their work to enable the respective countries to carve out and affirm a unique identity for themselves. The drama of any society therefore reflects the problem, aspiration, philosophy, and cultural background of people. In fact, the themes have transcended through many dramatic periods. Also, the fact that these plays were performed by professional actors make them a transitions between the classical drama and the play we see today. Now, the function of dramas. It represents a story realistically through the actors to the audience. Drama is therefore used to entertain, inform, and educate people. We can see that it is the most effective tool for mass mobilization by the government and private agencies. For instance, most campaigns against AIDS, drug abuse, child abuse, and so on are presented in the form of drama to educate, enlighten, while at the same time to entertain people. तो फंक्शन, अगर हम ड्रामा का जो मेन फंक्शन बताएं तो वो उसको रियलिस्टिक स्टोरी बताना होता है ऑडियंस को, दैट इज़ सोसाइटी को। और ज़्यादातर उसमें लोगों को ड्रामा में हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फॉर्म या एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं। लाइक आजकल की बात करें या पहले की बात करें तो उसमें सोसाइटीज़ में जो इल इफ़ेक्ट होते हैं जो उनको शो करता है थ्रू ड्रामा, जिससे लोगों को एजुकेशन भी मिलता है, उनको एंटरटेन भी होता है और उनको समझ में भी आता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। Of all the creative artists, the dramatist is in the best position to reflect his society and to cause social reform. तो जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, लाइक अगर हम किसी पेंटर की बात करें, किसी सिंगर की बात करें, तो उसमें ड्रामाटिस्ट की बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि वो सोसाइटी को और उसके सोशल रिफॉर्म को बहुत ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है अपनी थ्रू ड्रामा के। This is because his work has a unique characteristics of presenting events in a vivid, picturesque and realistic manner. This helps to stamp social condition realistically in the minds of audience. Its message is therefore immediate. The rich and the poor, the young and the old, the literate and illiterate enjoy and grasp the message of drama once it is presented in an appropriate language. तो सिंपल सी बात है कि ड्रामा के थ्रू आप हर एक लाइफ के या सोसाइटी के कितने भी लोग हैं, आप उन सबको एक ही, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, वो जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उनको ड्रामा के थ्रू आप सही लैंग्वेज में अगर बताएं, उनकी समझ वाली लैंग्वेज में बताएं, तो उनको इमीडिएट मैसेज मिलता है कि हाँ ये सोसाइटी में चल रहा है। नाउ वी कैन सी दैट द टाइप ऑफ ड्रामा. Dramatic performances are generally classified into specific categories according to the mood, tone, and actions depicted in the plot.
सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ ड्रामा इंक्लूड, जो पॉपुलर ड्रामा है फिलहाल हम उन्हीं की बात करेंगे. फर्स्ट है कॉमेडी. कॉमेडी का मतलब है लाइटर इन टोन, यूजुअली हैप्पी एंडिंग्स एंड मेक ऑडियंस लाफ. नेक्स्ट है मेलोड्रामा. मेलो मीन्स म्यूजिक एंड ड्रामा. अ प्ले दैट यूटिलाइज म्यूजिक एक्सटेंसिवली, जिसमें म्यूजिक का काफ़ी रोल होता है ड्रामा के अंदर. ट्रेजेडी मीन्स बेस्ड ऑन डार्कर थीम्स. ट्रेजेडी पोर्ट्रेज सीरियस सब्जेक्ट्स. Tragic comedy, play that mixes both comic and tragic in equal proportion. France refers to comedy of situation. It is humorous play on a tribal themes like mistaken identity, switched costume, misheard instructions, etc. France doesn't treat serious social issue. Next है opera. This versatile genre of drama combine theatre, dialogue, music and dance to tell grand stories of tragedy or comedy. Next आता है elements of drama. तो according to the Aristotelian convention, 6 basic elements are followed in any drama across eras. These are Dianoia. The theme of play is the central idea around which the story is built. Opsis, the visual element like costume, special effect, stage props and makeup. Mythos, the order of event occurring in a play is the plot. What the character do, what happened to them in the end constitute the plot. Ethos, the characters of a play are essentially the person who perform the drama. Lexis, the diction or the language used in most important aspect of a play. Language may include both verbal and non-verbal techniques. Last है mellows, that is the music composition, the sound and the rhythm of dialogues, the background score and the sound effect is the mellows element of drama. Ancient and medieval drama. Ancient Greek drama was the first seed which was showed and become a base for all later dramas. तो अगर हम एशियन ड्रामा की बात करें तो सबसे पहले उसमें ग्रीक का नाम आता है जहाँ से ड्रामा की शुरुआत हुई थी. द रोमन ड्रामा वॉज एन ऑफ शूट ऑफ द ग्रीक बट वॉज सून डिग्रेडेड एंड करप्टेड इन लेटर एम्पायर्स. विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एज अ स्टेट रिलीजन, थिएटर वॉज considerably lowly and frowned upon. Very soon the church itself was utilizing the tendencies earlier endeavor to be crushed. Drama arose in 10th century in monasteries when modification was being done in mass. Religion could be explained to the illiterate using the play which depicted scenes from the master's life. Often symbolic objects were used to convey the tales, meaning, and even the priest used pantomime to explain the events of Christian ritual celebration. These performances developed into liturgical dramas. The earliest is Whom Do You Seek? East by Easter Troop, dating 925. Liturgical dramas were sung by two groups and no actors were involved. तो liturgical drama का सिंपल मतलब है जिसमें दो लोग ग्रुप में गाना गाते हैं, लाइक कुछ भी उनका म्यूजिक होता है, उसमें कोई एक्टर नहीं होता. दे प्ले स्टार्ट लाइक दिस एंड ended like this also. However, between 1965 and 1975, Ethelwold of Winchester composed regularly Concordia, that is monastic agreement, which contain a playlet complete with directions for performance. The liturgical plays were performed near a church with identical incidental music and not an essential part of a standard church service. चर्च ही ड्रामा को करवाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इससे वो लोग इलिटरेट लोगों को भी उनके बारे में समझा सकते थे. और ज़्यादातर वो लोग लिटर्जिकल प्ले यूज़ करते थे जिसमें कि सिर्फ थ्रू म्यूज़िक दे कैन मेक पीपल टू अंडरस्टैंड, नॉट बाय एनी डायलॉग और एनीथिंग. नेक्स्ट है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर, also known the Norman French literature, that is old French language writing as used in medieval England. After the Norman conquest in 1066, this dialect became the vernacular of court, the law, the church, school, universities and other areas of trade. Anglo-Norman was an acquired tongue and mark of gentleness used in Wales and Ireland and to a certain limit in Scotland.
Norman conquest Norman conquest is also known as the Battle of Hastings. The most obvious change after this battle was the introduction of Anglo Norman as the language of ruling classes of England, displacing Old English. A few other places belonging to Anglo Norman literature are given below. ले जू de Adam, the play of Adam कहा जाता है. Sante Resurrection, Resurrection of the Savior. Le jeu de Saint Nicholas, the play of Saint Nicholas. Drama of the Age of Revival. Age of Revival बोला जाता है. This is the second age in the history of English literature. The Age of Revival started in the year 1400 and went on till the year 1550. Out of the 9 long ages. तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे. फिलहाल तो ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल में पहला आता है हमारा मिस्ट्री प्लेज. मिस्ट्री प्ले ड्रामाटाइज स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. तो ये लोग जो मिस्ट्री प्ले में बाइबल की स्टोरियों के बारे में बताया जाता था. दे इंक्लूडेड ड्रामाटाइजेशंस ऑफ द फॉल ऑफ लूसीफर, Cain and Abel, Noah and a flood, the nativity and a passion of Christ. These are some dramas. The mystery plays were long cyclic drama of the creation, fall and redemption of humankind based on biblical narratives concerning mainly on the life and passion of Jesus Christ. तो मिस्ट्री प्ले का सिंपल और सीधा रिलेशन बाइबल से होता था. ये बहुत लंबे प्लेज होते थे जिसके अंदर वो लोग क्रिएट करते थे, उनको फॉल दिखाते थे. फॉल इन द सेंस उनकी गलतियों की वजह से, एंड रिडेम्पशन ऑफ द ह्यूमन मैनकाइंड. और ज़्यादातर इसमें जीसस क्राइस्ट की स्टोरियों को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर ही स्टोरियाँ दैट इज़ प्ले में होती थी. दे ऑलवेज एंडेड विद द लास्ट जजमेंट. तो जजमेंट के ऊपर लाके वो लोग हमेशा एंड कर देते थे. सम ऑफ दीज प्ले आर द वेकफील्ड साइकिल. It has several brilliant plays attributed to the anonymous Wakefield master. The cycle consists of 32 plays. Second है the Second Shepherd's Play. It was written in the late 15th century and it is part of Wakefield mystery play cycle. The Chester Play. The 25 Chester plays are more serious, acted on Monday, Tuesday and Wednesday in a Whitsun week from 1268 to 1577 than in 1600. Important play of this cycle are Fall of Lucifer and the Creation and the Fall. Using strange animals and flight of pigeons added interest and made these more realistic. Last year the Conventry plays. These plays were set to be acted at Conventry on the festival of Corpus Christi. The 42 plays are preserved, and it is known that not all the plays were acted in 1 year. The custom was to perform the first 28 in 1 year and the remainder the next year. नेक्स्ट है इसके अंदर आता है मिराकल प्लेस. तो मिराकल प्लेस वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ ऑफ डिफरेंट सेंट. दे स्पेशली री इनैक्टेड मिराकुलस interventions by the saint. Although many scholars consider the term miracle play to include the genre of mystery play. Other distinguish miracle play from mystery plays by the way of their source material. तो miracle play को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं या उनको कहते हैं. कुछ लोग इसको मिस्ट्री प्ले के नाम से जानते हैं, मिराकल को ही मिस्ट्री बोल देते हैं. कुछ बोलते हैं कि मिराकल प्ले फ्रॉम द मिस्ट्री प्ले बाय द वे ऑफ देयर सोर्स मटेरियल. उसमें क्या मटेरियल, कहाँ से उसका सोर्स है. Whereas mystery play are based upon scriptures, miracle plays are not recognized as miracle plays since they resemble miracle more than any other dramatic form. Example of miracle plays are the Conversion of St. Paul. इसका पूरा नाम है The Digby Conversion of St. Paul is a Middle English miracle play of the late 15th century. The play of the Sacrament. It is the only host miracle play to survive in English. It was written in the East Midland dialect of Middle English not long after 1461. Next है morality
plays. Morality plays evolving from the medieval sermon conveyed a moral truth or lesson using illogical terms. They personified moral qualities such as charity or vice और abstractions such as death or youth. तो मोरालिटी प्ले जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ मॉरल, कुछ लेसन, कुछ ट्रुथ बताने के लिए. दे वे ड्रामाटाइज्ड एलर्जीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, his temptation and sinning, his quest for salvation and his confrontation by death. तो लाइफ की एलर्जीज बताते हैं, उनकी टेम्पटेशन क्या पाना चाहते हैं, उनकी सिनिंग, हिज क्विस्ट फॉर साल्वेशन मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनकी क्या जद्दोजहद रहती है, एंड हिज कन्फ्रंटेशन बाय डेथ, और लास्ट में जब उनकी डेथ होती है उसको कैसे कन्फर्म करते हैं. तो ये सब आप मोरालिटी प्ले के अंदर देख सकते हैं. The purpose of the morality plays were dictating its objective was to instruct the audience on the application of Christians' doctrine to everyday life and the cultivation of character. The earliest complex extant morality play is The Castle of Perseverance, which was written around 1425. Everyman, written around 1500, is perhaps the best known morality play. आप एवरीमैन के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसको कि बेस्ट मोरालिटी प्ले का नाम दिया गया. इट डिपिक्ट्स एवरीमैन जर्नी इन द फेस ऑफ डेथ. सम मोरालिटी प्लेज आर द कासल ऑफ परसेवरेंस. इट इज़ अ 15th century मोरालिटी प्ले ऑफ 3649 लाइन्स. नेक्स्ट है स्केल्टन मैग्निफिसेंस, यूजली रेफर टू सिंपली एज एवरीमैन. It is a late 15th century English morality play. Further is the Somnium Everyman, written by John Skelton. It is considered to be the first extant political morality play. Last topic है हमारे वीडियो का important dramatist of the age of revival. There are many dramatists, but we just discuss about these four: Henry Medwell, John Bale, John Restell, and Nico Manchivillians. So I hope you like the video. Make sure to comment on the video to know further about any topic you want me to discuss in the video. Thank you so much.